There's an update on the Rajouri mysterious illness case in Jammu and Kashmir. Experts have found the cause behind this mystery illness that has claimed at least 17 lives in Jammu and Kashmir's Rajouri. The deaths had sparked fear and panic in Budal village over the past few days, leading a central team to also probing the cause. Now, doctors had earlier ruled out any virus or bacterial presence in the samples. In the latest update, Union Minister Jitendra Singh has said that this illness could be just due to toxins. After a wave of deaths due to a mysterious illness, over 200 people have been quarantined and shifted from Badal village, which has been declared a containment zone. In the last 2 days, 6 more people have fallen ill, causing alarm over the spread of the disease, which has killed 17 people in the past 6 weeks. The Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, has found cadmium toxins that may have caused the illness and subsequent deaths of people. उसकी जो आरंभिक जांच हुई, जिसमें हमारी एक टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी लखनऊ की थी, जो CSIR की लेबोरेटरी है, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, वायरस नहीं था, बैक्टीरिया नहीं था, ये टॉक्सिन था। अब टॉक्सिन क्या था, उसकी जांच जारी है। तो एक लंबी सीरीज है टॉक्सिन्स की, जिनको लेकर के टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्द ही उसका भी समाधान होगा, और अगर कोई शरारत है या कोई और उसके अंदर मैलाफाइड कोई गतिविधि रही है तो उसका भी पता चल जाएगा. Among the 17 dead, 14 were children. Experts have ruled out any communicable disease, outbreak of virus or bacteria behind the deaths. After the insecticide was found in the spring water villagers use, it has been sealed off, and doctors say deaths may well be due to neurotoxins. न्यूरोटॉक्सिन में नर्वस सिस्टम को जो तबाह करता है, वो मैंने बताया भी कि दिमाग के कुछ हिस्सों को जो डैमेज करता है. देखिए, एक बार मैंने बताया कि दिमाग अंदर से ब्रेन स्टेम बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय होगा, वो सोजिश होगी, वो नेक्रोज हो गया, तो फिर तो स्पोर्टिव थेरेपी है ना. फिर आपने सिर्फ वेंटिलेशन डाल के उसकी सांस चलानी है, आप रिवर्स नहीं कर सकते. Meanwhile, nomads are worried about the livestock left behind in the containment zone. Local MLA Javed Iqbal Chaudhry has assured them that their livestock will be looked after till they return home. वो स्पेशल होता है, वो माल आपके तक मैं फोटो भेजूंगा तो माल जी ठीक है. और परेशानी को भी फोन आ गया, वहाँ अदाइयाँ देखा स्पेशल तक बंदा रखा स्पेशल जी जी. A few days ago, Chief Minister Omar Abdullah had visited the village. He assured people that the government will do everything possible to save lives and investigate the mysterious disease. An interministerial team of central government is already in Rajouri to investigate the deaths, but so far the government has no success. Nazir Masoodi reports for NDTV.